Dear students, we are continuing relative motion of maths paper, third dynamics for the students of BA, BSc, 6th and third year. We are doing this question. Two motor cars are moving uniformly along two straight roads, making an angle of 60 degree with each other, with velocities of 20 km per hour and 12 km per hour. If the first car be moving towards and the second car away from the junction of the road, find the relative velocity first with respect to the second. Solution is: take OX, OY as axis of reference and O as the junction of the two roads. Let the second car move along OX with velocity 12 km per hour and the first car move along NO with velocity 20 km per hour and angle NOX equal to 60 degree. Let B be the relative velocity of first car with respect to the second car, making an angle theta with OX. Then V is the resultant of actual velocity of first car and reverse velocity of second car. The actual velocity of first car along OX equal to minus 20 cos 60 degree, minus 20 cos 60 degree kilometer per hour. Actual velocity first car along OY minus 20 sin 60 degree kilometer per hour. Actual velocity of second car along OX 12 km per hour. Actual velocity of second car along OY 0. Reverse velocity of second car along OX minus 12 km per hour. Reverse velocity of second car along OY 0. So B cos theta equal to minus 20 cos 60 degree minus 12 equal to minus 10 minus 12 equal to minus 22. And V sin theta equal to minus 20 sin 60 degree plus 0 equal to minus 10 under root 13. Squaring first and second and adding. So B square equal to minus 22 का whole square plus minus 10 under root 3 का whole square equal to 484 plus 300 equal to 784. B equal to 28 km per hour. Dividing second by 1 we get tangent theta equal to minus 10 under root 3y minus 22 equal to 5 under root 3y 11. Since sin theta and cos theta are both negative, so theta lies in the third quadrant. Theta equal to थर्ड में पाई ऐड कर देंगे प्लस tan इनवर्स 5 under root 3 by 11. Next question: a cyclist traveling at 10 km per hour is overtaken by a car moving at 10 under root 2 km per hour as they both arrive at a crossroad. ठीक है. The cyclist keeps straight on, but the motorist proceeds along the road that makes an angle 135 with his previous line of motion. With what velocity and in which direction does the car appear to the cyclist to move? अब सॉल्यूशन है इसका. द साइकिलिस्ट एंड द कार इनिशियली मूव अलोंग एक्स डैश ओ एक्स. इस तरफ मूव करते हैं. ठीक है. ऑन रीचिंग द क्रॉस सेक्शन, जब क्रॉस सेक्शन पे पहुंच जाते हैं एट ओ पे, द साइकिलिस्ट मूव्स अलोंग ओ एक्स, वो ओ एक्स की तरफ जाता है. एंड द कार मूव्स अलोंग ओ ए की तरफ जाती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद ओ एक्स. Let V be the relative velocity of car with respect to the cyclist, making an angle theta with OX. कहता है मान लेते हैं V क्या है, with the relative velocity of car with respect to the cyclist, making an angle theta with OX. Here V is the resultant of actual velocity of car and reverse velocity of cyclist. The actual velocity of car along OX equal to 10 under root 2 cos 45 degree kilometer per hour
Reverse velocity of cyclist along OX minus 10 km per hour. Therefore, B cos theta equal to 10 under root 2 cos 45 degree minus 10. 10 minus 10 equal to 0. First equation. Actual velocity of car along OY 10 under root 2 sin 45 degree kilometer per hour. Reverse velocity of cyclist along OY 0. तो V sin theta equal to 10 under root 2 sin 45 plus minus 0 equal to 10. स्केयरिंग एंड एडिंग, इनको रिजॉल्व कराना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ. तो वी स्केयर इक्वल टू 0 का स्केयर प्लस 10 का स्केयर इक्वल टू 0 प्लस 10 100. देयरफॉर वी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. डिवाइडिंग सेकेंड बाई 1 वी गेट वी साइन थीटा बटे वी कॉस थीटा इक्वल टू 10 बाई 0. तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू infinity, theta equal to 90 degree. Hence the apparent velocity of car is 10 km per hour along OY. Apparent velocity of car is 10 km per hour along OY. Next is a ship is sailing due west and the apparent direction of the wind as shown by fluttering of the flag on the mast is from the north. North से आ रही है wind की direction. Find the wind is known to be blowing from a point 30 degree east of north. Since show that its velocity is double that of the ship. Ship से double velocity है इसकी wind की. Let u be the velocity of ship sailing due east towards OW. ईस्ट की तरफ जा रहा है OW से, वेस्ट की तरफ से OW. Let B be the apparent velocity of wind along NOS, north or south towards OS. Let B be the actual velocity of the wind. अब फिगर देखते हैं. दिस इज द फिगर. ये नॉर्थ OS, WOS, OE, which is blowing in the direction 30 degree east of north. Wind क्या है? 30 degree east of north. ईस्ट ऑफ नॉर्थ से 30 डिग्री बना रहा है विंड. एक्चुअल वेलोसिटी वी ऑफ द विंड इज द रिजल्टेंट ऑफ एपरेंट वेलोसिटी बी ऑफ विंड एंड एक्चुअल वेलोसिटी यू ऑफ शिप. यू एक्चुअल वेलोसिटी शिप की और विंड की एपरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड कैपिटल वी, एपरेंट वेलोसिटी कैपिटल बी ऑफ विंड एंड एक्चुअल वेलोसिटी यू ऑफ शिप. Actual velocity wind along OW equal to V cos 60 degree and apparent velocity wind along OW V cos 90 degree. Apparent velocity रिवर्स कर दो ना इसको. wind along OW V cos 90 degree equal to 0. OW की तरफ 0 है, ये cos 90 0 होता है. तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ शिप अलॉन्ग OW इक्वल टू U. तो देयरफॉर V cos 60 डिग्री इक्वल टू 0 प्लस U. तो V/2 1/2 cos 60 1/2 होता है इक्वल टू U. इम्प्लाइज U इक्वल टू 2 टाइम V इक्वल टू 2 टाइम U. हैंस द वेलोसिटी ऑफ विंड इज डबल दैट ऑफ शिप. शिप की वेलोसिटी से डबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शिप स्ट्रीम्स ड्यू वेस्ट